Hello students, so welcome back to a new lecture, and in this lecture we are going to discuss about a new content, a new theory that is known as probability. So our today's topic is probability. Okay, so before going into the depth of this chapter, let us know the meaning of probability. What does the probability tells us or defines? Probability kahaku kuha jaye ame bujhiba. So the literal meaning of probability is possibility. Okay. So what is the literal meaning of probability? Possibility. The Odia meaning of possibility is sambhavana. Hei pare, no hei pare. Sambhavana gote. Understood? Let me tell you an example. Suppose the sky is cloudy. Jodi akas meghwa thibo. Then there are two possibilities. What are they? Either it will rain or it will not. Borsa hei pare. Borsa no bhi hei pare. Okay, these are two possibilities. These two possibilities are known as probability. One more example you can take. Suppose this is a marker. If I am going to break this marker, okay, then there are also two possibilities. Either the marker will break or this marker will not break. Right? Again, if you are trying to start a scooter, okay, जदि तुम स्कूटर को किक मारिबा बा स्टार्ट मारिबा आरंभ कलो, then you get two possibilities. Either the scooter will start or the scooter will not start. Understood? One more example also. See, this is a coin. If I am tossing this coin, then what will happen? There are two possibilities. Either you get a head or you get a tail. Either तुम head पाइबो, नहले तुम tail पाइबो. So बुझियाला कि नहीं? ताले probability or literal meaning है possibilities. Either it will happen or it will not happen. So the four examples that I have taken, जो चारटा example मु देली, from that four example we got an idea that whenever we are going to do an experiment, okay, breaking a marker is an experiment. Okay, if you are going to start a scooter, it is also an experiment. If you are tossing this coin, then it is also an experiment. Okay. So whenever you are going to start a experiment, then there are always two possibilities. Either it will happen or it will not happen. Okay. So one more example. If a human being birth, okay, then either he will die or he will not. बंची पारे बा मरी पारे. हला बंचिबो केतेबेले जदि अमृत रस पान करिथिबो. हला विष्णु पुराण देखिथिबो अमृत रस पान करिथिबो, then he will live, otherwise he will die. So there are always two possibility of every experiment. Okay. So for example that I have taken, if I toss a coin, then there are two possibilities. What are they? Either we will get head or we will get tail, but we don't know which will come. Okay, आमे जानिनु जे कोटा आसीबो, but एतिकी जानु जे either head आसीबो or tail आसीबो, but we cannot predict whether head will come or tail will come. आमे कहि परिबानी जे head आसीबो ना tail आसीबो. Okay, if the sky is cloudy, then we cannot say whether it will rain or it will not rain. But yes, we can say it may rain or it may not rain. आमे कहि परिबानी जे एक्जाक्टली वर्षा हबो ना वर्षा हबोनी. आमे एया कहि परिबा जे वर्षा हेई पारे न भी हेई पारे. Right? Similarly, if you start a scooter, then you get two possibilities. Either the scooter will start or it does not start. Okay? But you cannot say always it will start. सबବେଳେ कहि पारे जे स्कूटर हमें किक मारि जे माने स्टार्ट हबो नाही. स्टार्ट हेई पारे नो भी हेई पारे. Okay, there are always two possible outcomes or two possibilities. Okay, so these are the experiment. Okay, kicking a scooter or starting a scooter, tossing a coin, breaking this marker are known as experiment. Okay, and in this experiment we will get two possible outcomes, but we cannot say which outcome or which result is definitely occurs. Ko result
100% हबो बोली हमें कहि परिबा कि नाही कहि परिबा नाही then this type of experiment is known as a random experiment. Okay, so there is a term random experiment. So what is a random experiment? The experiment in which we cannot predict the result is known as a random experiment. Okay, so write it. An experiment is known as a random experiment. Random experiment. If कौन है आपको हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट कहबा if फर्स्ट थिंग सब बड़े केतरा पॉसिबल आउटकम आस्तबो कहया देखि दुईटा पॉसिबल आउटकम आस्तबो if there are always two possible outcomes or two possible chances. Okay, if an experiment has two possible chances, then it is known as random experiment. This is the first condition. And the second condition is we cannot predict the result. हमें result कौन हबो कहि परिबा नहीं 100% जे एटा ही हबो कहि परिबा नहीं. Suppose I am giving an exam. मुसे एग्जाम रे पास करिबी कि पास करिबिनी मु एक्जेक्टली कहि परिबिनी. There are two possible outcomes. Either I will pass or I will not. Understood? So second thing is we cannot predict the result of an experiment. Okay, आमे से experiment रो result को predict करि परिबा ना. And the third thing is the most important thing. What is the third condition? So in an experiment, the two possible outcomes we will get, and every outcome or every result has an equal chance of getting. It means, suppose मु coin को toss कली, तले मु पाइबी गोटे head, आ गोटे पाइबी tail. ता जो दुईटा result बाहरला जो दुईटा possible outcome बाहरला, प्रत्येक कर 50-50% chance अछि आसीबार. Either head will come, then there is a 50% chance. Either tail will come, then it is also 50% chance. So सबो आउटकम बा सबो रिजल्ट रो गोटे 50% चांस अछि होबार. बुझियला कि नहीं? फॉर एग्जांपल मु जे स्कूटर को स्टार्ट करली त एटा स्टार्ट हेई पारे और न हेई पारे. ओके, तले हेबो बोली मु 100% कहि पारिबि कि नो 50% हेई पारे आ 50% न हेई पारे. So every result okay has an equal chance of getting or has a 50% chance of getting. Understood? So you can write every result or every possibilities has an equal or 50% chance of getting. Understood? These three are the major condition in order to be an experiment like random experiment. Okay, so random experiment होबा पई कोन कोन दरकार. फर्स्ट कथा हला कोन ना दुईटा पॉसिबल आउटकम आस्तबा दरकार. सेकंड कंडीशन इज दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिजल्ट. हमें रिजल्ट को प्रेडिक्ट करि परिबा नाही, भविष्यवाणी करि परिबा नाही. थर्ड हला कोन ना एवरी पॉसिबिलिटीज हैज एन 50% चांस ऑफ गेटिंग. जेति कि भी पॉसिबिलिटी हमें पाइबा समस्ते 50% मे भी आसी पारे आ 50% नो आसी पारे. हमें 100% ट्रुथ रे कहि परिबा नाही, सियोरिटी रे कहि परिबा नाही जे एई जिंसरा आसीबो बोली. बुझियला हला. सो दिस आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, देन द सेकंड टर्म आ गोटे नुवा टर्म हम गोटे सिखिबा. व्हाट आर दे? इट इज नोन एज आउटकम. ओके, so second is the outcome. What is an outcome? Whenever you are going to break this, okay, जतबे तुम एटा को ब्रेक करिया को जाउछो तले केतरा पॉसिबिलिटी पाउछो? दुईटा पॉसिबिलिटी पाउछो. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इट विल ब्रेक, एटा भांगी जिवो. सेकंड पॉसिबिलिटी इज इट विल नॉट ब्रेक. ओके, सपोज आई एम ब्रेकिंग ए स्टिक. Okay, then
what will happen? Two possibilities: it will break or it will not break. Okay, so all the possibilities, all the results are known as outcomes. जति कि हमें result पाइले, कितना result पाइले? दुईटा result पाइले, ए दुईटा result को कौन कहा जाए? Outcome कहा जाए बा possible outcome बोली कहा जाए. बुझिए ना? ताले आउट एग्जांपल हम जो नहीं परिबा, tossing a coin. Okay, coin को जो हमें toss करिबा, ताले either हमें head पाइबा और हमें कौन पाइबा? Tail पाइबा. ताले there are two results. Either we will get a head or we will get a tail. Okay, and these two possible results are known as possible outcomes. So right, what is possible outcomes? Now all the result, all the possibilities of an experiment is known as outcome. So write this: all the possibilities or results of an experiment is called outcome. बुझिए लगे नहीं? सो एते जिंस आबे क्लियर हे गले हला. सपोज मु ए पानी बोतल टा खोली दी, ताले रिजल्ट कोन आसीबो? पॉसिबिलिटी कोन? आइदर आइदर पानी थाई पारे नहले पानी न भी थाई पारे. बुझिए हला? सो दिस आर नोन एज एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम मींस थाई पारे पानी न थाई पारे. सो बुझिए हला? इतरे जिंस होची बेसिक जिंस जोटा कि हमको जानि बार हला. सो आ गोटे एग्जांपल आमे वर्तमान नबा. मने करो गोटे लुडू गोटी जोटा को आमे कहू डाइस. लुडू गोटी हला, डाइस जानते कि नहीं? लुडू खेला जाए डाइस. सो जते तुम डाइस को थ्रो करिवो हला, ए लुडू गोटी को आमे थ्रो करू तते कोन होय? केतरा पॉसिबल आउटकम आसे? केतरा आसे कहलो? 6टा पॉसिबल आउटकम आसे. आइदर तुम 1 पाई परिवो, नहले तुम 2 पाई परिवो हला, नहले तुम एते 3 पाई परिवो. जणे पकेले त 4 पड़ला, आ जणे पकेले 5 पड़ला, आ जणे पकेले छक्का 6 पड़ी गला. ताले whenever you throw a dice, जेते तुम डाइस को थ्रो करूछ ताले केतरा पॉसिबल आउटकम आसीबो? 6टा पॉसिबल आउटकम आसीबो. ओके, ताले ए जो 6टा पॉसिबल रिजल्ट को कोन कहा जाय? आउटकम. राइट, बुझियला? एंड थ्रोइंग ए डाइस ताको कोन कहा जाय? एक्सपेरिमेंट. थ्रोइंग ए डाइस, डाइस को फिंगियो कोन कहा जाय? एक्सपेरिमेंट. ताले बुझियला ना एथरक जे एक्सपेरिमेंट कोन? जे कोन सी जिंस हमें कहू कहा जाय एक्सपेरिमेंट. किंतु एटा रैंडम एक्सपेरिमेंट केते बेला होबो? जदी हमें तार रिजल्ट को प्रेडिक्ट करि पाइबानी. आउ प्रत्येक जिंस एटलीस्ट आसीबा न आसीबार चांसेस 50-50 थिबो. हमें यदि पकेबा 1 आसी पारे न भी आसी पारे, 2 आसी पारे न भी आसी पारे, 3 आसी पारे न भी आसी पारे. So there is an equal chance of getting is the number in a throwing of dice, right?